Hello everybody, welcome to iExamBee's Legal Beat. This is Amrita, your law faculty here at iExamBee. आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ. द पोस्ट फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ. दिस इज़ अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी and also there is no negative marking in the examination. So I would suggest all of you to give your best for this examination. And इससे related जो भी topics है उससे कुछ गाइडेंस मैं आपको इस वीडियोस के द्वारा देने वाली हूँ. आई विल बी टेलिंग यू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स and also I will be telling you the approach that you should have in studying a particular subject. If you have any queries, you can reach out to us directly in the comment section of this video, or you can also email us on hello@iexambee.com. Write to us. You can also call directly 920-552-4028. Visit our website www.iexambee.com. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ एग्जाम 2023 एंड इस एग्जामिनेशन के लिए आपका सिलेबस ऑलरेडी रिलीज हो चुका है. आई थिंक आप लोगों ने वो सिलेबस अच्छे से स्टार्ट भी कर दिया होगा पढ़ाई करना. आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले अबाउट हाउ टू स्टडी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. This is a very vast subject and moreover it is a theoretical subject. So students find it difficult to limit that subject, especially how to study that from exam point of view. रिमेंबर जब आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस अथॉरिटी स्पेशली जिस अथॉरिटी में वो वैकेंसी के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव, उसका जॉब प्रोफाइल, ये सब ध्यान में रख के उसको लॉ से कोल रिलेट करके आपको डिसाइड करना होता है कि कौन से टॉपिक्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे. Because remember one thing, the examiner is going to ask you something which is very important from the area, which is very basic from that subject, or it is directly related to that particular job post and that particular authority. So like that we will try to ace the subjects. The syllabus for law that is given in part B: constitution, contract, arbitration, conciliation, transfer of property, limitation, labor codes, CPC, administrative law, AAI Act, Aircraft Act, Partnership Act, Companies Act, IBC, law relating to tenders, and lastly Public International Law in comparison to Law of India. ये आपका सिलेबस है. आई वुड सजेस्ट आप लोग इस PPT को भी डाउनलोड करके रख लें आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए. Public International Law in comparison to Law of India. What they have mentioned here specifically, I would like to draw your attention to this point. Public international law in comparison to law of India we are studying. So we have to know the basics. What is public international law and how you are correlating it with the law of India. इसमें environment से related आपको काफ़ी सारे examples मिलेंगे. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ. एनवायरनमेंट से रिलेटेड हमारे पास लॉज हैं, स्पेसिफिक स्टैट्यूट्स हैं, EPA एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे पास प्रोविजंस है. आर्टिकल 21 में भी हमने राइट टू लाइफ के साथ एक होलसम एनवायरनमेंट को इंटरप्रेट किया है. And we have so many international instruments for the same in which India is a party and India is also ratified those documents. So this is how international law is working. So there are certain theories, there are certain basic things and definitions about this law. ये सारा आपके लिए important होगा. आइए देखते हैं कौन से टॉपिक्स चीफली इंपॉर्टेंट होंगे. स्टार्टिंग विद द बेसिक, व्हाट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ. देयर आर द 3 कैटेगरीज ऑफ इंटरनेशनल लॉ: पब्लिक, प्राइवेट एंड सुप्रानेशनल लॉ एज वेल. तो उसमें से आपको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पे फोकस करना है, पर बेसिक आपको पता होना चाहिए व्हाट आर दीज 3 कैटेगरीज. देन व्हाट इज ह्यूमैनिटेरियन लॉ. फिर डेफिनेशन के साथ कुछ थियरीज हैं अबाउट नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कंपैरिजन विद द इंटरनेशनल लॉ, कंपैरिजन विद द म्यूनिसिपल लॉ, यानी कि उन दोनों का कोरिलेशन. ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. इसमें जो थियरीज हैं, डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, वेदर इट इज़ अ वीक लॉ, व्हाई इट इज़ अ वीक लॉ. देन कम्स द सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. We have state as well as individuals as subjects of international law. When we talk about state as subjects, there are different topics that are arising out of that. So वो भी आपको डिटेल में पढ़ना होगा. स्टेट के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं. देन इंडिविजुअल्स में आप ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट के बारे में पढ़ सकते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट jurisdiction. State jurisdiction is also a subtopic coming from state as a subject of international law only. But why I have given that as separate?
because state jurisdiction talks about territory until where state can exercise its jurisdiction and control. So उसमें आता है एयर स्पेस. आपके एग्जाम के लिए एयर स्पेस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हाईजैकिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड इनसे रिलेटेड लॉज एंड कन्वेंशंस, ये सारे आपको पता होने बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये डायरेक्टली आपके एग्जाम से रिलेट करते हैं. As I told you, you have to change your approach as per the examination for which you are preparing. Then, of course, sources of international law is indeed a very, very important and a celebrated topic from international law. Article 38 of ICJ statute is very important for that purpose. Then, United Nations and its organs. 6 organs are there in the UN. You can go through all the organs, the basic establishment of UN, what is its history, and what are the basic objectives for which each organ is functioning. जैसे कि ICJ भी एक यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गन है. सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, these 3 are the most prominent ones. So you can go through the basic of that much is enough for you. Then coming to lastly, I have mentioned these topics which you can prepare after you have thoroughly prepared the earlier topics. Like this, you have to prioritize your studies because the thing is that this subject is very vast. Again, I would tell you that. So इसमें prioritize करना बहुत important है आपके लिए. Law of sea and outer space, international humanitarian law, you can have a passing reference of that. इसमें आपके लिए air space law सबसे ज़्यादा important है. But then if a question comes, where the air space ends and where the outer space starts, so that basic we should know. So outer space और sea के बारे में आप एक passing reference idea ले सकते हैं. And international humanitarian law, what is UDHR, what is ICCPR, ICSCR, this basic human rights related development you will be able to understand in humanitarian law, laws controlling the wars. लेकिन उसको आपने एक passing reference की तरह भी पढ़ा तो that is enough for you. So this is how you can plan your preparation, and this will make sure if you are going in this manner you will be in the right direction. I want to ensure that. That's why I'm trying to bring up different videos in this particular lines now. So don't forget to subscribe to Legal Bee and prepare 50% faster with us at our exam bee. Thank you everybody.